So, as far as labor market goes, labor market we said is a part of the factor market. Now, factor market is basically land, labor, capital, right? The thing is, we have learned that anything you want to produce, you need these. So, whether if it's like a hospital, you need equipment, you need doctors and nurses, and you need natural resources like water and stuff. सो इन सब चीज़ों की एक अपनी अपनी डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट्स होती हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ यू नीड अ सर्जन फॉर योर हॉस्पिटल, एक सर्जन्स की डिमांड एंड सप्लाई मार्केट में चल रही होती है और उसकी बेसिस के ऊपर एक्स वेज और क्वांटिटी के ऊपर आपको बंदा मिल जाता है. वी ऑल्सो मैंशनड राइट एट द बिगनिंग कि लेबर मार्केट की जो लेबर की डिमांड होती है वो एक डिराइव्ड डिमांड होती है. दिस इज फ्रॉम ओ लेवल्स. लेबर हैज अ डिराइव्ड डिमांड. व्हाट इट मेंट वाज दैट कि लेबर की खुद की कोई डिमांड नहीं है. असल में लेबर जो गुड या सर्विस प्रोड्यूस करता है या प्रोवाइड करता है उसकी असल डिमांड है. सो इफ पीपल आर गेटिंग सिक and they need to go to the hospital, the demand for hospital goes up, the demand for doctors go up. Okay, it's not gonna happen कि nothing is happening to the illness and the sickness of people and that we expect कि demand for doctors is just gonna rise without the rise in the good of the service they're providing. It's highly improbable. So that is what we mean by a derived demand. Now, when we talk about demand for labor, obviously who demands labor? Well, mainly it's the firm. Why do they demand labor? Well, because this labor will be involved in the production or providing the service of the good. So simple सी बात है that there is a link between the quantity of labor that a firm wants to employ and the quantity of output that it is produced. ज़्यादातर हमने देखा है there's a proportional relationship that if you hire more labor, more output is going to be produced. But not always. There is a limit to that situation. So let's talk about that in our MRP theory. What is our MRP theory? Well, basically, we said marginal revenue product theory. Now, marginal का मतलब तो हमको पता है one extra of something, one extra unit of labor, one extra production, depending. Revenue we know is price into quantity. And product की जब हम बात करते हैं तो basically we're talking about output. So basically हो ये रहा है, we're saying इन द मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट थ्योरी के ठीक है जी, डिमांड फॉर लेबर फिगर आउट करना है. एक फर्म कितना वर्कर डिमांड करती है, वी नीड टू फिगर दैट आउट. सो इन ऑर्डर टू डू दैट हमने कहा ठीक है वो फर्म मुझे कितना कमा के देगी. आई एम नॉट आस्किंग वो वर्कर मुझे कितना आउटपुट बना के देगा. आई एम आस्किंग वो वर्कर मुझे कितना पैसा कमा के देगा. तो इसी वजह से इट्स नॉट अबाउट मार्जिनल प्रोडक्ट, इट्स अबाउट मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. इफ इट वाज अबाउट मार्जिनल प्रोडक्ट ये तो हो गया कितना क्वांटिटी बना के देगा. तो मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट इज वेरी सिंपल. इट इज उस लेबर ने मुझे कितना आउटपुट बना के दिया, मार्जिनल प्रोडक्ट, इनटू वो प्रोडक्ट मैंने कितने में बेचा. तो जब बेसिकली कितना बना के दिया वो हो गई क्वांटिटी और कितने में बेचा वो हो गई प्राइस. तो एज अ रिजल्ट मुझे रेवेन्यू निकल आएगा. इन आर केस वी कॉल इट MRP निकल आएगा, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट निकल आएगा, अदर थिंग्स बीइंग हेल्ड कांस्टेंट. सो इसको जरा वर्किंग करके देखते हैं. दिस वी ऑलरेडी डेल्ट विद थ्योरी ऑफ कॉस्ट के चैप्टर के अंदर. थ्योरी ऑफ कॉस्ट के चैप्टर में वी वर डीलिंग विद कि मैक्स कार वॉश था और उस कार वॉश के अंदर जब आप लेबर ऐड करते हो तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी कैसे चलती है. सो नंबर्स आर गिवन टू अस राइट हियर. नंबर्स क्या है? पहला कॉलम इज अबाउट
the number of workers that I'm hiring. 1 worker, 2 workers, up to 5 workers. टोटल प्रोडक्ट हमको बता रहा है कि कितना टोटल गाड़ियां वॉश कर रहे हैं. 0 workers obviously 0, 1 worker 5, 5 workers 15. The more number of workers, the more cars are being washed. But I am more interested in इसके हर दफ़ा जब मैं एक वर्कर एक्स्ट्रा हायर कर रहा था तो मेरे मार्जिनल प्रोडक्ट में कितना इंक्रीज आ रहा था. How do we do that? Let me just show you one calculation for it. Marginal product का formula था change in total product over change in the quantity of labor. So when I hired the first worker, he washed about 5 cars, तो मेरा MP हो गया 5 cars. जब मैं 1 से 2 पे गया तो टोटल प्रोडक्ट 2 बंदों ने मिलके 9 गाड़ियां वॉश की. पहले बंदे ने 5 वॉश की तो दूसरे ने 4 की वॉशिंग की है. If you notice over here compared to chapter number 3, in chapter number 3 first these numbers of MP were going up before falling down. यहाँ पर we're saying कि बस as you're hiring more workers the MP has started going down. That means the law of diminishing marginal returns पहले वर्कर पे ही सेट हो चुका है. ऑल्सो नोन एज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. ये दोनों शॉर्ट रन के कॉन्सेप्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट हैं एमसीक्यूज में. दे आर ऑलवेज वैलिड दोनों चैप्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से. सो देन व्हेन आई हायर द थर्ड गाय एमपी गिरता जाता है एंड दिस इज हाउ माय मार्जिनल प्रोडक्ट लुक्स लाइक. इट कीप्स ऑन फॉलिंग डाउन. ठीक है जी. सो इफ आई वॉज टू प्लॉट देम दिस इज हाउ दे वुड लुक लाइक. अगर मैं टोटल प्रोडक्ट प्लॉट करूं अगेंस्ट द क्वांटिटी ऑफ लेबर, दिस इज हाउ द शेप इज. Okay, this is how my total product looks like. As I'm increasing the labor, पहले it increases by 5, then it goes to 9, then it goes to 12, 14, and then 15. हल्का सा increase आ रहा है and maximizing. Now in chapter number 3, the way we drew it was something like this. It went like that. It had an increasing at an increasing and then increasing at a decreasing and then hitting the maximum. This is how we did in chapter number 3. So that one is a valid one. जहां तक इसका मैं MP की प्लॉटिंग करूंगा with the quantity of labor, well it's going like 5 4 3 2 1, so it's going बिल्कुल ही एक linear direction के अंदर it's working. Okay, it's going down in a very linear fashion. This is how my MP is going down. 5 4 3 2 1. ठीक है. Basically, since it is falling down like this, यहाँ पे you have an increasing at a decreasing rate. अगर यही चीज मैं ऐसे बना देता कि ये यहाँ पे इस तरह से जा रहा होता MP का कर्व, first increasing return, इसको हम इंक्रीसिंग रिटर्न बोलते हैं, एंड देन डिक्रीसिंग रिटर्न. यहाँ पे हम बोलते हैं लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न सेट्स इन, या फिर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस. दे बोथ आर द सेम थिंग. इफ दिस वाज द केस देन मेरा टोटल प्रोडक्ट कुछ इस तरह से जाता. ठीक है. एंड देन इट वुड हैव जस्ट कैरिड ऑन एट अ स्लोअर स्पीड एंड यू इस तरह से जाता. दैट्स अ डिफरेंट केस, irrelevant for our case over here. But anyhow, ये तो ऊपर के numbers की basis पे मैंने बना लिया. Now we have to figure out the marginal. इस एक वर्कर ने मुझे 5 कमा के दी, 5 गाड़ी वॉश करके दी, लेकिन कितना रेवेन्यू कमाया. तो उसके लिए वी हैव अ फॉर्मूला, कितनी गाड़ी वॉश की MP इंटू कितने की थी वो गाड़ी की वॉशिंग, MR. ये हमारे पास नहीं है अभी, तो लेट्स ब्रिंग दैट. दिस इज हाउ आई ब्रिंग दैट. द कार वॉश मार्केट इन विच मैक्स ऑपरेट्स इज परफेक्टली कंपेटिटिव. तो अगर ये परफेक्टली कंपेटिटिव मार्केट का हिस्सा है तो इसका मतलब तो ये हो गया कि इसका जो
डिमांड कर्व है वो भी परफेक्टली इलास्टिक है। और जब डिमांड कर्व ऐसे होता है तो हमें पता है एमआर, एआर, प्राइस सब यही होती है, ठीक है। और यहां पे उसने बता दिया कि 4 पाउंड की इसकी एमआर है बेसिकली। टू गिव यू अ बैकग्राउंड ऑन दिस कि परफेक्टली कंपेटिटिव से इसको कैसे लिंक बनाया, बेसिकली दिस इज व्हाट आई डिड। इफ यू रिमेंबर कि मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर बेसिकली हम क्या पढ़ते थे कि डिमांड और सप्लाई की बेसिस के ऊपर इंडस्ट्री की कार वॉश, अगर ये कार वॉश अब प्रीटी मच सारी कार वॉश एग्जैक्टली सेम ही है, लेट्स अस्यूम, तो फिर ये जो $4 की प्राइस नॉर्मल डिमांड और सप्लाई के हिसाब से कार वॉश इंडस्ट्री के अंदर जो एक प्राइस सेट हुई है, एक सिंगल फर्म को उसी प्राइस के ऊपर काम करना पड़ेगा। एंड वी सेड ये प्राइस टेकर्स होते हैं वगैरह, डिस्कशन था हमारा। अब तुम एक तुम्हारी डिमांड हो या 5 की डिमांड हो, द थिंग इज द प्राइस इज नॉट गोइंग टू चेंज, इट्स $4। So since MR has been established, now I can easily complete my MRP ke numbers. So this MR is 4. So I'll do 4 into 5 is 20. पहला वर्कर मुझे 20 पाउंड कमा के देता है। दूसरा वर्कर क्योंकि उसकी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी गिर गई है, इंटू 4 वो मुझे 16 कमा के देता है। 12 कमाता है, 8 कमाता है, 4 कमाता है। तो ऑन दैट नोट, if I was to construct my MRP curve, so it's going to pretty much take the shape of the MP curve. The shape is going to be exactly the same. It's only the y-axis values which are going to be different. Like for example, 1 के ऊपर it's going to be 20, ठीक है। 2 के ऊपर it's about 16, 3 के ऊपर it's about 12, and so on, right? So the shape is exactly like MP, but the thing with MRP is that MRP निकलता है MP into MR से। Alright, don't get confused if they say MPP. It means the same thing. It's just that MPP represents marginal physical product and MP just simply means marginal product. So if there is an MPP wala addition, don't worry, it means the same thing. So since MRP is MP into MR की value तो unchanged रह रही है, तो the shape MRP is going to assume is going to be the MP का curve की. So there's no difference in that. Alright. So once we have this discussion कि ये तो एक सिंगल फर्म का डिमांड फॉर लेबर आ गया ऑन द बेसिस ऑफ हाउ मच मनी ही मेक्स फॉर अस, एमआरपी थ्योरी। नाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड कि एक प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ लेबर क्या है। मार्केट स्ट्रक्चर्स के टॉपिक में हमने पढ़ा था, इफ यू रिमेंबर, मार्केट स्ट्रक्चर्स के अंदर प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कंडीशन वाज MR is equals to MC. That was our condition in market structures. In labor market, our profit maximizing condition will be MRP is equals to MC. Okay? So, MRP तो हम निकाल चुके हैं वैसे तो, ठीक है। So if I was to give you, let's do some numbers and markings on it. So that's about 1, 2, 3, 4, and 5. I'm trying to keep as equally spaced as I can for simplicity purpose. Over here, I'm ignoring one important rule of diagram,
विच इज़ के मार्जिनल्स की प्लॉटिंग हमेशा हमेशा मिडवे होती है. आई एम इग्नोरिंग दैट फॉर जस्ट सिंप्लिसिटी पर्पस, नो हार्म इन इट. इनफैक्ट तुम्हारे पूरे कोर्स के अंदर देयर इज नो इशू इफ यू डोंट plot marginals halfway. So these are the numbers that I have. Okay. ये हो गया मेरा मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट. ना आई डोंट हैव माय एमसी. मार्जिनल कॉस्ट किधर है? सो द थिंग इज, क्योंकि हम प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग कर रहे हैं और पूरी थ्योरी के अंदर अजम्पशन है कि हम परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट की स्टडी कर रहे हैं. ठीक है, तो जब हम परफेक्टली कंपेटिटिव लेबर मार्केट की स्टडी करते हैं तो चक्कर ये होता है उसके अंदर दैट वी हैव टू अस्यूम कि इंडस्ट्री और फर्म के अंदर जो लेबर का स्किल सेट है वो होमोजेनस है. ठीक है, इंडस्ट्री के अंदर लेबर की डिमांड और सप्लाई, ना डोंट मिक्स इट विद मार्केट स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे वेज रेट है, यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ लेबर है, डिमांड फॉर लेबर है, सप्लाई फॉर लेबर है. तो इस इंडस्ट्री के अंदर लेट्स से 5 मिलियन कार वॉश वर्कर्स मिलेंगे $8 £8 की वेज रेट पे. ये इंडस्ट्री ने सेट कर दिया. 5 मिलियन कार वॉश वर्कर्स आर अवेलेबल और विल बी हायर्ड इन द ओवरऑल कार वॉशिंग इंडस्ट्री एट £8. अब एक जो सिंगल फर्म है उसको 5 मिलियन बंदा तो नहीं चाहिए. हमारे इस केस के अंदर उसको सिर्फ 5 बंदे चाहिए. तो हम कहते हैं जब मार्केट के अंदर वेज रेट £8 सेट हो गई है तो एक सिंगल फर्म को जितना लेबर चाहिए उसको मिलेगा. ये होती है मार्जिनल कॉस्ट या वेज रेट. और ये कैसे सेट हुई ये इंडस्ट्री बताएगी कि एक वर्कर चाहिए कि 5 वर्कर चाहिए, क्या 5,000 वर्कर चाहिए. £8 में मिल जाएगा एक सिंगल फर्म को. क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर 5 मिलियन वर्कर का हिसाब निकल चुका है £8 के ऊपर. सो फॉर अ सिंगल फर्म getting 5 workers for £8 is not a big deal. Now that we've established कि marginal cost भी यहाँ पे labor भी perfectly competitive market का हिस्सा है, तो ये तो सेट हो गया marginal cost £8 के ऊपर. ठीक है, तो what I'll do is in my diagram to figure out कि कितने वर्कर हायर करने चाहिए, 8 के ऊपर मैंने अपनी मार्जिनल कॉस्ट प्लॉट कर दी. दैट्स माय मार्जिनल कॉस्ट फॉर लेबर या वेज फॉर लेबर. ठीक है, नाउ सो व्हाट्स हैपनिंग इज द फर्स्ट वर्कर earns me about £20. I pay him about £8. तो मेरा मार्जिनल प्रॉफिट हो गया £12 का. किधर रहे वो £12 की रिफ्लेक्शन? आई विल शो यू इन माय डायग्राम. ये डिस्टेंस बता रहा है मार्जिनल प्रॉफिट. फर्स्ट वर्कर मेक्स मी ए प्रॉफिट ऑफ £12. शुड आई हायर हिम? आई से या डेफिनेटली आई शुड हायर हिम बिकॉज ही इज अर्निंग मी £12. पहले बंदे ने मुझे £12 का प्रॉफिट कमा दिया. I'll call it marginal. MP might be confusing, so I'll call it M profit. और total profit भी 12 का हो रहा है. Second बंदा, if I hire, I pay him $8 and he makes me $16. ठीक है, so second बंदे ने मुझे मार्जिनल प्रॉफिट कमा के दिया 8 का और मजीद इंक्रीमेंट, और टोटल प्रॉफिट मेरा हो गया 20 का.
So should I hire my second guy? I say, yeah, definitely go ahead with it. It's a good idea to hire this guy. How about the third guy? Well, the third guy, I pay him $8. He makes me about 12. I still make from the third guy, I make about £4 extra. My total profit has gone up to 24. So I should hire my third guy. Fourth guy, I pay him $8. He makes me $8. So my profit does not change and my maximum profit is at its peak right now. However, if I go for the fifth worker, he earns me $4 and I pay him 8. That means there is a loss on the fifth worker or of about -4, and my profit goes down to 20. So if I want to profit maximize, 4 is the workers that I should hire. 4 workers के ऊपर क्या हो रहा है? At 4 workers, MRP is equals to MC, right? This is my profit maximizing. 24, highest peak I'm gonna do at the 4th. I was doing it at 3 also, लेकिन 3 के बाद अगर ये 30 और 40 होता तो 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 39 तक बंदे के ऊपर मेरे पास मार्जिनल प्रॉफिट्स आ रहे होते. So that's why we say exactly where you finalize and you end up with a 0, that's the point where you should hire 10. Okay. So what if MRP is greater than MC? What should you do? So we say you should increase the quantity of labor that you're hiring. Okay? And on the other end, what if the MRP is less than the MC? What should you do in that case? Well, in that case, you should decrease the number of labor that you have. ठीक है? So increase means as long as MRP is greater than MC, you increase, and the moment MRP is less than MC, you go back, taking you to the profit maximizing level of workers, which is MRP equals to MC. That's your profit maximizing की पूरी कहानी. The next thing we have is कि ठीक है हमने establish कर दिया MRP curve is the demand for labor by a firm, and it comes about MP into MR करके. So we're talking about some determinants जो डिमांड कर्व में चेंजेस लेकर आ सकते हैं. वेल, पहला डिटर्मिनेंट देयर मेंशनिंग इज द वेज रेट. वेल, वेज रेट एक मूवमेंट, बल्कि लेट मी राइट इट ओवर हियर. द फर्स्ट वन इज द मूवमेंट along the curve wala factor. Wage rate is the movement along the curve wala factor. What it tells us is that if the wage rate goes up, the quantity demanded for labor is going to go down. And if wage rate goes down, then the quantity demanded for labor is going to go up. How is it the MRP curve? Well, as you've seen कि जब हमारा MRP curve ऐसे होता है, downward sloping like this, and you have a point is marked, like let's suppose इस wage के ऊपर this many labor is being hired. So if the wage rate goes up, what's going to happen? Well, if the wage rate goes up, you're going to have a contraction in supply of labor. Similarly, if the wages go down, then there is an extension in the supply of labor. More labor, extension in the demand for labor. Firms will want to hire more.
So the first one is the movement along the curve factor. All the rest after that, from number 2, 3, 4 onwards, they are shift related factors. Okay, so I'll write these are the shift factors. All right. So since we established MRP is equals to MP into MR, so the first thing we're saying is कि अगर लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए, ओके, लेबर की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाए सेम वेज रेट के ऊपर, दिस कुड हैपन बिकॉज ऑफ them getting better training, and as a result obviously their skill level rises, right? And as a result obviously their productivity is going to go up. And when that happens, let me go up to those graphs of ours. If their productivity goes up, your MP curve is going to shift to the right. That's how the MP is going to go. And when MP goes to the right, obviously because MP is related to MRP, this curve is going to shift to the right. So our demand for labor has shifted to the right as a result, because if MP went up, MRP is going to increase. Okay, that's one way of looking at it. So in our case, for the determinants, if MP increases, MRP is going to go up and it's going to shift to the right. Another shift factor is that the demand for the good rises. Well, how is that linked? Let's go over here. अब ये जो गुड है ये परफेक्टली कंपेटिटिव का गुड था, तो मैं अपनी इंडस्ट्री और फर्म की डिमांड वाले डायग्राम को देख रहा हूँ मार्केट स्ट्रक्चर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से. We're saying if the demand for the product this labor is producing goes up, so what happens as a result? The price just went up, and when the price went up, the MR went up, isn't it? And when demand goes up, in my diagram over here, when this MR increases, this MRP curve is going to shift to the right. So that's an absolute determinant which is linked with the MR. Okay? So if the demand for good goes up, the MR is going to go up, and since MRP is actually MP into MR, so if this rises, then this rises, and as a result, the MRP goes up. Another factor that can cause the demand for labor to change is the price of substitute for labor. Now, what's substitute for labor? Well, capital. Capital is substitute for labor. If the price of capital increases, the capital becomes more expensive. Per dollar MP is gonna fall for it. And so we will say that yeah, the demand for labor should increase as a result of it. ठीक है? Firms will prefer, अगर चाहो तो इसको मैं इस तरह से भी prove कर सकता हूँ. I'm not going to go into the basis, but there was an equimarginal principle in production that we dealt with. Equimarginal principle was telling us that the marginal productivity of capital divided by the price of capital, yani this is telling you per dollar in capital kitna production de raha hai, it should be equals to per dollar labor ke andar kitna aa raha hai, wo combination best hai. However, if the price of capital goes up, that's the denominator going up. So what's going to happen is they're not going to be equal anymore. In fact, what's going to happen is that this is what's going to happen.
per dollar productivity in capital will be less than per dollar productivity in labor. So we say you should get less capital as a result of that, and you should get more labor. Now remember, labor की price में कोई change नहीं आया है, but you are demanding more labor. That is because probably the equimarginal principle has changed, so the demand for labor, yani MRP, is going to shift to the right as a result of this. ठीक है? So I can just give a notation over here. The MRP for labor is going to increase and shift to the right. So the next thing we have is, how do we come up with the market demand for labor? Now, this is a mathematical way that we've been doing it for quite some time now. Demand ka market demand curve, supply ka market supply curve, and then we did this in O levels, AS levels, in fact, even in A levels in market structures, we've dealt with this. So basically, idea वही है कि हर वेज रेट के ऊपर डिफरेंट फर्म्स की क्या डिमांड है, and then once we have that, you just horizontally add them to find the market's demand curve. So let me show you, in fact, how we're dealing with this. I'll just do, for, let's say, I'll just assume that there are only two firms, okay? And so firm A, firm B, and then that will result in the market. So you have firm A, you have firm B, you have firm A's MRP curve, and let's say this is firm B's MRP curve. Okay. At this particular wage rate, WO, this firm is willing and able to hire 3 workers. At the same wage rate of WO, this firm is willing and able to hire just 2 workers. So what's happening is that at this wage rate of WO, the market demand is 3 plus 2, 5. Right? I've just added कि इसकी कितनी demand है और इसकी कितनी demand है. At wage rate W1, this has a demand for 7, and say this इसकी जो demand है, that's about 10. So 10 plus 2 is equals to 17. So इस wage rate W1 के ऊपर you will have about 17 के ऊपर, then you have your 2 points, and when you connect the 2 points, we get this is the demand for labor in the market. ये हमारा horizontal summation का method है. So make sure market demand curve MRPs पे dependent है. MRPs of different firms, you horizontally add them together at each wage rate, and you basically get yourself. If you were to define it, you can use the terms like horizontal summation, or you could just simply write this. Both cases, it's absolutely fine. Moving on. The last thing about this is about the elasticity. I don't know if you guys remember it, but let me remind you how the shape goes for these diagrams that we talk about elasticities. Okay. So you have the wage, you have the quantity of labor. Now we've seen the MRP curve is downward sloping. Well, it can be like this and it can be like that as well. ठीक है, दोनों तरीके से MRP curve possible है. So पहले केस में क्या हो रहा है? This is the wage, this is the quantity, and I increase the wage rate. And when I do that, I see a very large fall in the quantity.
as compared to the second case, where if the wage increases, the quantity hardly falls. So, on that note, the first one, the percentage change in quantity is much greater than the percentage change in the wage. So, we call it elastic. In the second one, the percentage change in quantity is lesser. So, we call it inelastic. Now over here we have factors के जिस केस के अंदर PED for labor is elastic. Okay, so all reasonings given is in that way. They're saying your PED is going to be elastic, like our first diagram over here, that any change in the wage will cause a very large change in the quantity if the goods that this labor is producing is also elastic. For example, if in a hospital you have a neurosurgeon, now neurosurgeon is dealing with the brain, and anyone who has a problem with the brain, for them it probably is a necessity situation that needs to get fixed. So since that particular surgery is very important, the demand for that neurosurgeon is going to be really high as well. But on the other hand, if you have like a plastic surgeon and the products or the service they're providing is making old people a little more beautiful, probably, so that particular service we're saying is not an essential one, that's a luxury thing. So the demand for these plastic surgeries might be elastic. So as a result, the demand for plastic surgeons might be elastic as well. And if they ask for higher wages, the hospitals might be willing to cut them short reasonably. Okay. Second is how easy it is to substitute labor with other factors like capital. If a labor can be easily substituted, and if they ask for higher wages, you can fire them and immediately get somebody else. ठीक है? So if the labor is very easy to substitute, then the PED for them will be elastic also. Okay? इसके अंदर हमारे पास examples हैं जो automated machines are replacing the workers on the assembly lines. Why? Because they're doing the same monotonous, same type of job, which the robots can easily do it. So now these people become expendable. Third is about how much proportion of the total cost does it take. In schools, we've said that teachers take the majority percentage of the total cost. And if the wage goes up by 10%, for the school, that is going to be a very costly rise in the wage. It's a very costly cost to them. So as a result, in order to manage, they will have to fire a lot of teachers in order to bring their total cost into control. Okay? So a rise in the wage rate will cause a big change in the demand for labor if they take a large proportion. But if it takes a small proportion, makes no difference, you know. So even if the wage rate goes up, it would not matter to me because it's taking a very small proportion. थोड़ा सा बढ़ गया तो क्या होता है? And lastly, it's about the time period I have. In a school in the middle of the year, if the wage teacher says I want a higher wage, well, unfortunately, the school is dependent on them. They can't find anyone else immediately, or the work that is happening is very important, so they'll just keep them for the while. But by the end of the year, they will find an alternative and they can easily substitute. So if it's longer the time period, easier it is to substitute labor for other factors of production, and therefore it becomes elastic. All the opposite, we're going to make it inelastic.